बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्ले ग्रुप क्लास। वेलकम बैक टू द इंग्लिश लेसन। आज का जो हमारा डे है वो है डे नंबर 2। बच्चों, डे नंबर 2 में हम क्या करते हैं? डे नंबर 2 में हम देखते हैं उस साउंड का फेस जिसको हमने पिछले लेसन में स्टोरी में छुपा हुआ सुना था। तो व्हाट वाज द साउंड अबाउट? कैन यू रिकॉल इट? यस, वाह वाह, वॉच वॉच। टीचर्स, वी आर फॉलोइंग द ब्रिटिश एक्सेंट, और ब्रिटिश एक्सेंट में जो W की साउंड है, इस लेटर की साउंड, वो थोड़ी सी ह की आवाज़ के साथ रिलीज होती है जब आप उनको फील करवाते हैं कि वाह वाह। सो दे कैन फील द एयर प्रेशर। जब आप वेजिटेबल्स बोलते हैं तो इट्स लाइक व, देयर इज नो सच प्रेशर ऑफ द एयर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द लंग्स। तो आज जो किताब का सफ़ा है बच्चों, उसके ऊपर देखिए, कैन यू सी दिस फेस ऑफ द साउंड? यस, this is the face of the sound. And you know what funny about it? You can make it with your fingers also. 1, 2, 3, 4. Yes, this is how you will make the face of the sound on your fingers. So is it hard? Can you do it? Yes. Just like this. Can you see? All right, good. So playgroup class, जल्दी से दिखाइए मुझे अपना वाह अपने fingers पे. Good, nice and cute. So look at the other pictures here. Yeah, we have some art activity. Are you ready for the art activity? We have art activity and we have some pictures to talk about. So let's see what we are going to do today. Teachers, today is day 2. Day 2 में बच्चों ने हमारे साथ बहुत कुछ share करना होता है, and we should be prepared for that. We have to make sure that they are pronouncing the words in the proper way, और उसके साथ साथ वो साउंड्स की जो इनिशियल साउंड्स का फेस है वो भी देख रहे हैं। और फिर जब आप उनके साथ डिफरेंट वर्ड्स बोलती हैं रैंडमली, तो वो उसमें से भी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये आज वाली साउंड है, बिकॉज वी नीड टू मेक श्योर दे कैन डिफ्रेंशिएट ऑल्सो, क्योंकि ये हमारा मेन टास्क भी होता है। सो चिल्ड्रन, व्हाट यू सी ऑन द बैकग्राउंड हियर is a wall. Yes, it's a wall. Can you look around you in the classroom and can you see walls around you? Can you count how many walls? 1, 2, 3, 4 walls. Very good. This is a floor and that is a roof. So you have got 4 walls around you. Is that true? आज आपने घर जाके भी अपने कमरे में या अपने घर में जो जितनी सारी वॉल्स हैं, किचन की कितनी वॉल्स हैं, बेडरूम की कितनी वॉल्स हैं, लाउंज की कितनी वॉल्स हैं, सेन में कितनी वॉल्स हैं, सब काउंट करनी है। विल यू डू दैट? गुड। सो दिस इज अ वॉल। और वॉल कैसे बनती है, किस चीज से बनती है? ईंटों से, ब्रिक्स से। यस, ब्रिक्स से बनती है। ये जो ईंटें लगाते हैं, उर्दू में ईंटें कहते हैं, इंग्लिश में ब्रिक्स कहते हैं। ब्रिक्स हमने पढ़ा था। सो ब्रिक्स से वो वॉल बना रहे हैं। वेरी वेरी गुड। Now, I found something I wanted to share with you. Can you tell me what is this? It's a very big sea animal. It is swimming and jumping in the sea. What is it? It's a blue whale. Yes, it's a blue whale. Teachers, आप भी इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस बच्चों को दिखा सकते हैं, so that they can, get fascinated and see all the blessings we have all around us. So now teachers, what you're going to do, आपने डे 1 की जो स्टोरी थी उसको आपने रिकॉल करना है, वोकैबुलरी को रिकॉल करना है। दैट इज़ योर पार्ट। आप इनसे जब इंफॉर्मेशन रिट्रीव करवा लेंगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो फेस है साउंड का उसको ऑफिशियली देखेंगे, राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू करेंगे, एंड देन वी विल मेक श्योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड्स इट। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। जी बच्चों, स्टोरी के बाद वापस आगे तो बताइए, स्टोरी में ये कुछ नज़र आया था आपको? वॉज देयर whale? Was there about something about watermelon? Was there something about a week जिसमें वो फिश को बड़ी सी वेल को जो है वो खाना डालता था, उसकी टेक केयर करता था? Yes. So there are more words also. आपने वो भी टीचर के साथ डिस्कस करने हैं। Now it's time for us to look at the face of the sound. Can you make the face of the sound? I hope you can see it. Yes, just like 3 fingers. So let's draw it. I am going to draw it here, and where are you going to draw? You're going to draw in the air with me and follow the directions I do on the screen. Okay? तो भी आपने स्क्रीन पे देखना है, और जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ अपने पेन को मूव कर रही हूँ, आपको रेड रंग का पेन नजर आएगा ना, आपने अपनी फिंगर वैसे मूव करनी है। So shall we start? All right, let's start.
put your pen here, right here. Can you see the red dot? Okay, now let's go down. Then go up slanting line, good. And then come down back again, and then one more slanting line upwards, and then we stop right here. So teachers, this letter is also one stroke letter. तो इसलिए जब हम इनको directions देते हैं तो सिर्फ arrow को follow करने की directions देते हैं. We write this letter W in one go. So how do we write it? अगर आप गौर से देखें तो जब हमने वो सीखा था and then we bring another w together, it becomes wo. Can you see this? Wo. So एक हाथ से तो आप 3 fingers से show कर सकते हो, but with both hands you put 2 wo together and they become wo. V, wo, v, wo. Well done. So teachers, अभी आपने बच्चों से इसकी जो writing की practice है वो different mediums पे करवानी है. The best thing is on the tabletop or in the air. So all these vocabulary words जिनको अभी हमने discuss किया teachers, for example wood, wall, whale and watermelon. आपने अब इनसे कहना है बच्चों से कि at least they should use these words in at least one sentence, or if they can come up with their own story using the same words, that would be wonderful. For example, they can make a fantasy story, for example, that we made a wall of bricks, but we saw a whale jumping over the wall and going to eat a watermelon, and then there were some wood around us. कोई भी ऐसी स्टोरी जिनको ये अपने वर्ड्स में बोल सकें. यू हैव टू मेक श्योर कि चिल्ड्रन आर एबल टू स्पीक अबाउट इट. एंड देन देयर इज अ लिटिल पोएम आल्सो, एंड आई फाउंड अनदर video for the blue whale. Can you have a look at the screen? Can you see how fascinating and big and beautiful it is? It's a blue whale. So I have here a poem for blue whale. Watching the whales waving in the water, waving in the water, waving in the water. Watching the whales waving in the water, waiting to eat the worms. You know what are worms? Worms are little insects. They are inside the water. तो पानी में बहुत सारे छोटे छोटे भी जो कीड़े मकोड़े तैर रहे होते हैं, ये उनको भी खा लेती हैं. So this is the poem about. Teachers आप कोई भी चाहें तो ट्यून बना सकती हैं. आज का जो आपका मेन टास्क है कि वो इनिशियल साउंड को खूब अच्छे तरीके से पहचान ले और उसके बाद लेटर की शक्ल को भी देखना शुरू कर दें. एंड देन व्हेन यू नाउ विल गिव देम फ्लैश कार्ड्स ऑफ लेटर्स, तो उसमें से ये आज का जो लेटर है, कौन सा लेटर है आज का बच्चों? वो. यस, वो. इसको आप ढूंढ लेंगे और फिर इस साउंड से बनने वाले कुछ वर्ड्स जो आज आपने स्टोरी में भी सुने, वोकैबुलरी में भी डिस्कस किए, उनको आपने सही तरीके से बोलना है. और फिर जब टीचर बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स बोलेंगी जैसे बॉल, बैट, वॉल, तो आपने फौरन कहना, ओह दैट इज द वो वर्ड, दैट्स अ वॉल. ओके, गुड. सो नाउ देयर इज एन आर्ट एक्टिविटी ऑल्सो टीचर्स, जिसमें आपने बच्चों से एक आज के जो लेटर है उसका फेस का कटआउट देना है. दे गोइंग टू पेस्ट सम सीड्स ऑन इट. अगर आप एक्चुअल सीड्स ले सकते हैं वाटरमेलन के, इफ द सीजन इज देयर, तो आप इनसे कहें कि वो एक्चुअल सीड्स को पेस्ट कर लें. दैट वुड बी वंडरफुल. अदरवाइज यू कैन गिव देम लिटिल कटआउट्स ऑफ ब्लैक चार्ट पेपर और ब्लैक बटन्स, तो वो भी पेस्ट कर सकते हैं. बट ट्राई टू बी मोर क्रिएटिव, ट्राई टू ब्रिंग अप योर ओन रिसोर्सेज, मेक श्योर दैट द चिल्ड्रन आर ऑल्सो गिविंग यू सम फीडबैक. और उसके बाद उन्होंने सैंड ट्रे के ऊपर भी करना है. नाउ दिस टीचर हैज़ बीन रियली रियली क्रिएटिव. इस टीचर ने सैंड ट्रे की बजाय पेपर्स के छोटे छोटे पीसेस को ऐसे ऐसे बॉल बना के क्रम्बल करके एक ट्रे बना दी है जिसके अंदर बच्चे उससे राइटिंग करें. क्योंकि इसको सेंसरी राइटिंग एक्टिविटी कहते हैं. कोई भी चीज़ जिसको बच्चे छू के महसूस कर सकते हैं, आप उस मटेरियल से अपना ये ट्रे बना सकते हैं. सैंड ट्रे और सॉल्ट ट्रे बहुत इजी है बनाने के लिए. इस काम में मेहनत चाहिए होती है. अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर करें और ये बच्चों के लिए बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा. सो टीचर्स प्लीज़ मेक श्योर दे आर राइटिंग ऑन द वर्कशीट. एंड बच्चों आपने घर जाके क्या काम करना है? आपने घर जाके ऑब्जर्व करना है और इस साउंड वाले वर्ड्स में को घर में ढूंढना है. आपके घर में वॉच है, आपके घर में कैलेंडर है जिसमें वो वीक मेंशन हुए हैं. गुड. सो टीचर्स प्लीज कैरी ऑन विद द एक्टिविटी, बिल्ड अप the sound with them so that they can understand and write it in the next day. Take care. Allah Hafiz.